3 पे चला लो यार आराम से। हम्म। मैं आऊंगा तो 3 लगाना। बिरोदर। बस 2 मिनट। BMW। गेम तो चालू हो गया मेरा। ट्रांसफर। सुप्रीम भाई मेरा एक बार देखना, मैंने दूसरा तरह से सेटअप किया है इस बार स्ट्रीम को। बताना अच्छा है। Back online, driver. चलो इनवाइट करो मुझे। Shall we continue our journey, driver? Look at your garage, D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a dog model dedicated to the rest of the playlist. The Weasel. एनिमेशन वो हाँ चेंज तो हो सकता है। हाँ, वो मैं सिंपल मैंने वीडियो बनाया था। अरे कहाँ आया, मैं टीम में आया। ओ, कल करूँगा, मैंने आज थोड़ा ट्राई किया ना। फिर फिर से हाँ आ गया। हाँ वो कर लूँगा। वो ज़्यादा वो हो रहा है ना, ब्राइट है थोड़ा सा। सिंपल करूँगा उसमें पीछे वीडियो चल रहा है सीधे। After a marvelous French introduction,
I was now flying to Germany to pursue my work on the European luxury brands. I was expecting great things from the upcoming meetings. This leg of the journey was a promising one, as I was about to meet my esteemed counterpart at Porsche. My name is Frank Jung, and क्या बात I'm responsible here at the Porsche AG for the corporate archive and the car collection. The archive is kind of the memory of the brand, क्या the lifetime memory of Porsche. इधर skip करो skip कप्पू skip मारो इधर लाइफ टाइम कैसे मिल जाएगा भाई Talking about German luxury cars without talking about Porsche would be nonsense. It is one of the names that belongs in the pantheon of luxury car culture. Guided by my fellow archivist from Stuttgart, I was being honored with an insider tour of their museum, from which I was getting priceless notes and pictures for my archives, and for Motorfest. Among all the jewels that surrounded us, the Carrera GT took a special place in our day. A car born from a streak of Porsche victories, made to compete with the greatest. Top sports car in the 2000s. Dare I say, one of the top sports cars of all time. ओए चेक पॉइंट Be kind, rewind. राइट 6 आ गया अभी तो What a day, and what a car. I couldn't have dreamed of a better way to start my trip in Germany.
My Germany tour is officially on. After an incredible first stop in Stuttgart, I had the distinct pleasure of spending a day with Apollo Automobile and an absolute marvel of a car, the Apollo Project Evo. This car, which is still under development as I write these lines, is definitely one of the boldest and most aggressive-looking cars I've seen in my long career. The active aerodynamics, the fins, that rear spoiler, and X-Light signature, everything in this car's design screams, "You're getting eaten alive." And this interior, you really have to see it to believe it. Nothing short of a superhero car. Deliver. There's only one existing prototype at the moment. The one I just got the chance to discover. Note to self. I really must convince Apollo to lend this car to Motorfest for our upcoming luxury cars playlist. Luxury is elegance. Fine.
Nudge, D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a donk model dedicated to the rest of the playlist. The Weasel D Customs Edition. And if you stick around, you can be sure that Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Change color if you don't like this one. There are many others. मेरे पास और 6 लूंगा। कितना 1 महीना बचा है। My trip was getting me इससे to पहले dig गेम even रेसिंग गेम deeper into German car culture. The people from रेसिंग गेम ना Audi were now expecting me in the beautiful town मैं of asphalt खेलता था asphalt Ingolstadt in 9 Bavaria. अभी भी खेलता हूँ। वैसे ओपन वर्ल्ड नहीं खेला कोई रेसिंग गेम। The car that they had prepared for me, the one you driver should be driving when you get these notes, was a great surprise स्लिपस्ट्रीम and लो a ना great मेरे addition पीछे to रहो our luxury vehicle स्पीड बढ़ेगा experience. The 2020 और क्या Audi R8 LMS GT2. True racing car, as it was built for a very specific grand touring competition, the GT2 European इसलिए series. और नहीं लगा है रेस Yet also a true luxury car, as the GT2 event is in fact a particular championship designed for amateur pay drivers, a racing category for what we call the gentleman drivers. अरे वो एनपीसी पूरा Category in which this Audi R8 is queen. डेली सारे बस बताओ अरे भाई ये एनपीसी मुझे बाहर लेके चला गया क्या सिनेमैटिक इसमें गेम प्ले में अभी नहीं कर सकते सर ओपन वर्ल्ड में कर सकते हैं किसी अगर मुझे ना बाहर ले गया दो लैप है ना क्या मैं कप्पू को पकड़ पाऊंगा अरे वो कहाँ चले गए ब्रेक मारो ना थोड़ा सा अगर स्लिप हो रहा था हैंड ब्रेक नहीं नॉर्मल ब्रेक
हाँ। My last day in Germany led me to Mercedes for yet another thrilling ride. My ultimate appointment in this country was set with the breathtaking Mercedes AMG 1. The one and only, as Mercedes would say. Like all the German machines I had the pleasure to admire over the course of my trip, the Mercedes AMG 1 was indubitably on the powerful side. That's an understatement, as the One was built from the dream of bringing Formula One technology to the road. A dream that was meant to come true.
Everything in this car screams Formula One. Powertrain, materials, interior. And I believe world champion Lewis Hamilton himself helped Mercedes in the development of this car. To the driver who'll get behind the wheel of this machine in the festival, you're probably not ready. After a roller coaster of a trip through France and Germany, my luxury car pilgrimage was bringing me back to my home, Great Britain. My first encounter alone was enough to justify the trip, as I was about to meet yet another fascinating individual. My name's Stuart Wood. I'm Chief Engineer at Triumph. BMW S1000. We're in the Triumph Factory Visitor Experience here in Hinckley. It's a great display of motorbikes. If I had to pick just one bike, it's going to have to be the Rocket 3. It's got high performance, very high capability, high specification, really stunning looks. It really is phenomenal. A delightful meeting that would be followed by other great surprises from my homeland. My European journey was slowly coming to an end. Skip. Yet I still had so much to see to complete my luxury chronicles. कौन सी बाइक ले रहे हो? अरे इसमें तो वो वाली है शायद, ब्लू वाली. Cloudy grey skies and damp asphalt. I was back home, no doubt. And I couldn't be happier. I had a whole day with Triumph ahead of me, surrounded by passionate people to guide me through their motorcycle universe. अभी सीधे. Stuart Wood, concept engineer, had shared with me everything you could ever want to know about Triumph. Their 100 years of existence, the attention to detail, the perfect combination of performance and visual design. Fascinating.
this Rocket 3. कौन सी? Big and powerful, with a remarkable खरीदना पड़ेगा 2.5 ना? litre engine, but still easy to ride. An extreme motorcycle with a huge presence. A Triumph bike through and through. British craftsmanship and style, the passion of a whole biker community. This was shaping up to be another highlight of this European trip. All I could do is enjoy the moment. इससे अच्छा होगा। हाँ GTA 5 का ना। Raw performance has never looked as good as it does on a Triumph. I believe that's what they call character. हेलो जैनब भाई। जैनब भाई में Look at your garage, D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a donk model dedicated to the rest of the playlist. The Weasel D Customs Edition. And if you stick around, you can be sure that Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Change color if you don't like this one. There are many others.
स्पीडी हाँ तेरा दे मच्छरदानी लाया हूँ हाँ लाइट है पंखा हाँ मिक्सर नहीं होगा My next British stop was McLaren, with the most exclusive McLaren there is, the Elva. The extreme expression of what a McLaren car can be. Fifth in the McLaren Ultimate Series, a line that encompasses McLaren's most advanced design, engineering, and performance. Like McLaren says, the Elva is a car that needs no destination, designed to deliver nothing but the purest possible driving experience. Light, powerful, split-second agility, with no roof, no windshield. This is a car that plays with your senses and builds a connection between the driver, the car, and the elements. Directly in line with the experimental legacy of the founder of the brand himself, Bruce McLaren. Renowned driver and engineer, always looking to push aerodynamics further. The Elva is a beautiful tribute to that heritage.
I'd have the time for this detour at McLaren, कि भाई क्या but I भाग was है so ये बात है। glad I made the trip. दर्शन इनवाइटेड ही कौन कौन आया ऑनलाइन। स्लेयर है, दर्शन स्लेयर भी है। The Jaguar CX-75 concept. C stands for concept, X for experimental, and 75 as a tribute to Jaguar's 75th anniversary. A breathtaking hypercar that unfortunately couldn't be mass-produced. मुझे भी नहीं पता था, सबको ने बोला तब पता चला। क्यों भाई? Yet this prototype alone is quite the celebrity in the luxury car world. An elegant and avant-garde design so popular when it इसमें came तुम out पीछे चल रहे हो ना that she इसलिए। received the Louis Vuitton Prize at the Paris Mondial de l'Automobile in इसमें तुम पीछे चल रहे हो ना, 2010. बोरिंग लग रहा होगा। Star हाँ of यार, the भाग ही नहीं पा रहा 007 हूँ। movie Spectre, along with her co-star, the Aston Martin DB10. Another British वो तो concept. वही लेन देन है भाई। Quite the life for a concept car, isn't it?
movie star, news, prestigious prize winner. And this is only scratching the surface of what this car could have been. Jaguar. Look at your garage, D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a donk model dedicated to the rest of the playlist. The Weasel D Customs Edition. And if you stick around, you can be sure that Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Bentley. Change color if you don't like this one. There are Bentley many की ब्रांड others. एम्बेसडर बन इनका चक्कर। कौन सी बताओ? अरे इसका पता नहीं ना, ये जो हाल फिलहाल न्यूज़ है इसका मुझे पता है। अरे अरे ये न्यूज़ कल का ही है, इसीलिए मैंने बोला। नहीं नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड बना। Bentley. Could I really go on a tour of the greatest luxury car brands of Europe without stopping by this prestigious manufacturer's headquarters in Crew? Impossible. So, there I was, at Bentley, face to face with splendid machines, and notably, the Bentley Mulliner Bacala. The Bacala is gorgeous and impressive from afar, but also incredibly well crafted from up close. I was dealing with the elite of British luxury and design refinement. रियल है कॉन्सेप्ट ऐसा थोड़ा होता है। Extremely exclusive. Only 12 units have been made. Produced by Mulliner, the oldest coach builder in the world, and a serious token of quality. But, needless to say, such prestige comes with a significant price tag. कौन सी? हाँ तभी तो उसको पूछता है व्हाट्स योर पावर, तो आई एम रिच। जैगुआर की भी काफी कॉन्सेप्ट कार है।
वो इसके तरह तो बना था। हाँ हाँ, लोगो थोड़ा अजीब सा बनाया था। Just like this beautiful day with Bentley, my trip was slowly coming to an बहुत ही end. सिंपल लोगो था। My next stop will be the last of this Luxury Chronicles journey. और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट कार लाया था थोड़ा इसकी तरह दिख रहा था, क्या नाम है, रॉल्स रॉयल्स की तरह, लेकिन वो अलग था थोड़ा। अभी सबसे वो ले रहा है क्रिप्टो में टोल, $1 पर बैरल का। शैडो भाई भी आ गए। क्रू Today was the ultimate day of my European luxury tour. And it wasn't just any day. It was a day with Aston Martin. I had decided from the ये very कैसे beginning cheating to करे? save Aston Martin मैंने for भाई last. आपको For this छुआ भी नहीं। brand is quite unique when it comes to famous British cars. Aston, as a tribute to the corners पे Aston अच्छे Hill से race करना from the पड़ेगा, early सीखना पड़ेगा। 20th century, and Martin, from Smooth नहीं हो Lionel रहा। Martin, co-founder of the brand. The name Aston Martin now resonates in a very special way everywhere around the world. It embodies the British modern luxury touch, so to speak. Cars that are fast, cars that are beautifully crafted, and on top of that, cars that now come with an unmissable pop culture connection that started with the appearance of the DB5 in the Goldfinger movie in 1964. As a result, Aston Martin cars nowadays have undoubtedly become some of the most desirable cars in the world. हमारे My definitive treat during this day was being able to see the new Aston Martin Vantage. Freshly released, this brilliant vehicle is yet further proof that British luxury is still very much relevant, with a bright future ahead of it.
अब बताओ, इंडियन कंपनी का जो बाइक आता है वो इंडियन नहीं है। वो इंडियन नाम का बाइक आता नहीं। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, उस गाड़ी का नाम ही है इंडियन। हाँ। इमिग्रेंट सर। उनके साथ रेड इंडियन कहते हैं ना। हाँ हाँ। This is it, the end of my European luxury उसके tour. स्किन टोन With थोड़ा each stop more ये होता है ना, enlightening ब्राउन। than the last. A fruitful journey for my archives and for you drivers of Motorfest. मुझे लगता है वो जो अमेरिका में है, उधर जो, हाँ, जो मैक्सिमम इमिग्रेंट्स ही है ना, तो वो लोग मुझे लगता है इधर से, यूरोप से आए हैं ना सारे। इंडियंस भी बहुत है कनाडा में। हाँ। पंजाबी सब काफी रहते हैं। Look at your garage, D. अरे $1 In मिलियन addition to your मिलेगा आपको। Chevrolet Caprice production model, you now have a donk model dedicated to the rest of the playlist. अरे इसमें The Weasel D गाड़ी तो नहीं Customs मिलता, लेकिन Edition. शायद And if 1 you मिलियन stick मिलेगा। around, you can be sure that Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Change color if you don't like this one. There are many others. वो देखो, ये दबाओ डी पैड का ना, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड दबाया। उसके बाद आप रिप्ले कर सकते हो, राइट साइड वाला स्टिक को, नहीं, राइट साइड वाला स्टिक को दबाओ, प्रेस करो। हाँ, हाइट। और क्या प्ले हो रहा है कसम से। अरे गेम प्ले भी प्ले हो रहा है। रुको रुको, जो हमने गेम, अरे क्या मस्त था ये सीन। अल्ट F9 से होता है ना रिकॉर्डिंग। तीन क्या, नहीं तो
एनवीडिया का वो है ना, आपने ओवर क्या कहते हैं ऑन करके रखा है, ओवरले ही कहते हैं ना उसको, तो ऑल्ट F9 दबाओ। वो स्टार्ट। तो लेफ्ट साइड वाला, हाँ लेफ्ट साइड वाला वो दबाओ बटन, स्टिक दबाओ। अच्छा मतलब सिनेमैटिक अच्छा रिकॉर्ड होता है। मैंने रिकॉर्ड किया लगभग 2 मिनट का। ऑल गाइस, अरे कितना परसेंट हुआ है? मुझे टॉम रेडर खत्म करना है। लीडर, हाँ। अरे मैं भी उसके वीडियोस देखता था यार। हाँ रुको ना, ये क्या लो रुको। हम्म। स्टीम पे भी है और एपिक पे भी है और एक्सबॉक्स स्टोर में भी है। लेना तो स्टीम पे ही लेना। साढ़े 3,000 की। अरे वो आएगा ना फॉर्जा 6, वो लेना है सीधे। सारे जी GTA का गाड़ी का नाम याद रखा है सब। ये क्या बोल रहा हूँ।
क्या लगा? तो क्या तोड़ फोड़ करते हुए जा रहा गाड़ी? या उड़ते हुए आगे? सोलो सोलो तो नहीं। हाँ तो फिर इसमें फिनिश द इवेंट होगा। अरे इसमें भी शायद फोटो वाली है। लैम्बो पाइप को नहीं नहीं, पाइप को नहीं भूलेगा। Hey there. Do you copy? So for your first spin, all you gotta do is follow the instructions. अरे and तुम्हारी enjoy गाड़ी a इतना smooth स्पीड क्यों drive भाग through रहा the है? hell of the forest. I'm Kai, by the way. I'll be your guide from afar. I'll pick and prep your cars and give you some tips. Plus, you get to enjoy my company. Clearly the best part. अरे मैं सुप्रीम बस फॉलो करते हुए डिफेंडर मतलब। हाँ वो रिंग्स बनाने के लिए ले सकते हो फिर तो। हाँ, अरे वही तो बनाते हैं सब। I've been willing to meet you. On Motorfest ground, they say you're quite the driver. भाई सनलाइट इतना आ रहा है ना। साकुरा ट्री चेरी ब्लॉसम मिल गया। अरे ये वाला That Cadillac you're driving, that's a real piece of history. It was designed at the time to be the finest car money could buy. As you can guess, it's one of the most expensive production cars of its time. Better treat that old lady with all the respect she deserves.
next turn on the right. And right again. So, what do you think of Hawaii so far? I was born on this island, and I can tell you, there's no other place quite like it. रॉन्ग साइड जा रहा था मैं अभी. नहीं सेम ट्रैक था. I mean, seriously, look at this natural arch. I believe there will be a left turn on a dirt road real soon. Watch for it. अरे इसमें ऑफ रोड भी चलाना है. This car may struggle a little bit on the way up. Go easy on her. She's not as young as she used to be. Don't worry, its weight will help you gain some speed and have more fun on the way down. हाँ उसमें लैम्बोर्गिनी की गाड़ी मिलेगी आपको. See? प्लेलिस्ट Always कंप्लीट करने better के बाद. downhill. वो क्या इगोइस्टा? कौन सी लैम्बोर्गिनी इगोइस्टा ले रहा हो? पता नहीं ले सकते हो. Look at your garage, D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a donk model dedicated to the rest of the playlist. The Weasel D Customs Edition. And क्या if you 16:9 stick around, रेशियो you में can बन be रहा है? sure that Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Change color if you don't like this one. There are many others. सबसे बेस्ट उसी तरीके से है कपो. एक्सटेंड करके फिर क्रॉप कर लो. अरे फिर से ये गाड़ी. Okay, that was awesome. That's right, he showed them. Oh, and I get that's a race and all, but you're still driving an original 1957 Eldorado.
shadow, so look after it. Do not forget, I'm the one patching things up afterwards. अरे यार, कहाँ जा रहा हूँ? There's more to winning, but just a more powerful engine. क्या Some pro drivers learned that the hard way in the 50s. क्या? Does Ah. the name Hornet ring any bell? चैट जीपीटी में नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं। मुझे इसमें स्क्रीन शेयर करके बताना। फाइल साइज का बात बोल रहे हो या फिर क्या चीज़ का बात बोल रहे हो? नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ रेशियो का बात बोल रहा हूँ, रेशियो जैसे कि इमेज का साइज। Come on, one final push. नहीं, Hang in there. अगर आप थंबनेल लगाओगे ना तो आपको 16:9 रेशियो में चाहिए, 1920 और 1080p। कौन सा चैनल है? मुझे इमेज डिस्कॉर्ड में भेजा दो। Xbox Ultimate ये क्या है? क्रेजी जोन अल्टीमेट ये क्या सच में है ये? सुप्रीम भाई, आपने जो लिंक भेजा है अल्टीमेट लाइफ टाइम, स्कैम तो नहीं है? स्कैम हो सकता। अरे रिव्यू भी स्कैम करने के लिए डाल देते हूँ, बनाते हैं भाई। फ्लिपकार्ट में भी, फ्लिपकार्ट का भी अलग लिंक बना के ना डालते हैं लोग। पता नहीं, ट्राई करना। लाइफ टाइम का देगा तो नहीं है एक्सबॉक्स। अरे ये चलाना है अभी। अरे वेटिंग, सुप्रीम भाई का कनेक्शन इश्यू है।
लेफ्ट आपका दिखाया कि आप लेफ्ट हो। एह, भेजो भेजो। हो सकता है। She packs those with range extenders, then harvests nearby RFID signals. अबॉर्ट दबा दूं ना मंकी? इवेंट अबॉर्टेड कर दिया मैंने। She's too smart to be putting herself at risk like this. She must be testing for some reason. Better keep an eye out. Hey Yuri, you still have Black Cat's suit and equipment in the evidence lockup, right? Why? That ये किसके चल रहा है? मोटर गेम की। अरे गेम की साउंड आ रही है। D. In addition to your Chevrolet Caprice production model, you now have a कर donk दिया model dedicated to Screen the share rest बंद of the कर देता हूँ। playlist. The Weasel D Customs मैं भी Edition. कहूँ And if you मेरा stick बंदा around, कौन बोल you रहा can be है? sure the Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Change color if you don't like this one. There are many others. और सुना गप्पू बातचीत। वो हैगा दुनिया च जैनम तो ये Xbox वाला लेगा तो मेरे को बताना। अगर चला मुझे भी बताना। 900 रुपए में तो मैं भी ले लूँ। और ये देखो यार मैं कर रहा हूँ गैम्बल ही है वैसे भी। अगर भाई लगा लाइट अल्टीमेट का और तुमने महीने का ही है ना अल्टीमेट। ये सोच लो भी ये अगर गैम्बल भी हुआ ये एक महीने साल भर का भी दिया तो भी मैं ले लूंगा। और क्या है। देख के सुप्रीम भाई तो एक महीने का ही 1300 पड़ता है अल्टीमेट में। फिर चलाती है इन्होंने टाइम रेस चलाती है ना। अच्छा यहाँ से किया। अच्छा अगर पीएनजी फाइल है ये तो ऑफर करने का ड्रैगन पेंटिंग भी ऑफर करना है। पेंट जो पेंट ज्यादा स्टीक भी ज्यादा भाई Okay, it's all nice, colorful and lovely, but stay focused. आगे भाई दे जी Copies are awesome, but driving them in a race isn't exactly a walk in the park. अरे वो नहीं They're kept साइज तो बड़ा रहा है। center of gravity. इसकी रेशो होती है ना जो रेजोल्यूशन होता है ना 1280 by 720 by T समझे इसका। That's 16 right. जो 1920 by 1080 भी होता है। अरे नहीं जो अगर नॉर्मल से मेरी की बाइक देख पे हमने डेफिनेटली हो गया अपने नाम तो मैं करता हूँ उसको चेक करता हूँ ठीक है। अरे सुप्रीम भाई आपने लगाया आपका रेशियो गलत है। हमने लगता आज का डिस्काउंट दे अरे सुप्रीम भाई मैं आपको बताऊंगा ना वो कैनवा से हो जाता है इजीली। कब वो बता देगा। आज देखो मेरा काम तो सही था मेरा देखो परफेक्ट On top of being a road legend, this क्रॉप man कर got a दोगे फिर whole साइड lot of में names and नीचे nicknames वाले over the सेक्शन में। years. Depending on the country, it अरे is जो known मैंने as आज the थंबनेल bulldog बनाया or the उसका ऊपर split से वो काट because of देता its distinctive split screen. सुप्रीम And 26 the का वो cost comes बढ़ा to दिया। 21 because of it's 21 windows. Yeah, that's a lot. अरे गाड़ी कैसी चलती है डब्बा सा। ये बकवास रेस है यार ये विंटेज वाली। कितनी रेसें हैं इसमें? साइज चेक कर सुप्रीम पे कितना है Alrighty, let's push that good old Type 2 engine चल to मैं its देखना तेरा मैं absolute ट्राई limit. करके दूँ। You know about the Volkswagen engine types, right? तो मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट भी मार रही है पानी ड्रिफ्टिंग मार रही है। अरे इसी गाड़ी का एक जो पहले नहीं हमने लगाया था प्लेलिस्ट में मोटे मोटे टायर थे जो छोटी चीज से ना थोड़ी वो बढ़िया थी बात।
ओमनी, हाँ। अरे ये मैंने वो बहुत देखी है बाहर, ये बाहर बहुत होती है। ये जो अपने कई लोगों को रखते हैं बहुत संभाल। फुल बस भाई इंडिया में बहुत थी ये, बॉम्बे बॉम्बे साइड पहले बहुत बिकी है ये। हिप्पियाँ वाली गांजा फूकने। मेरी के बहन होगी वो That's the finish line right there. Come on, all out. ओमनी तो मशहूर है भाई किडनैपिंग वाली। उसका नाम शायद है ये कपल के और दूसरा सोनी का। था 2016 में आया था इंडिया एक बार, केड़ा नाम भाई। हम सैम केड़ा अपने इतने गुरुद्वारा साहब केड़ा अनंतपुर साहब वाल, नहीं हाँ अनंतपुर साहब वाल मंदिर केड़ा नैना देवी है कि वैष्णो देवी है? हाँ नैना देवी वाल, नैना देवी गए थे। नैना देवी गए थे और कहाँ से ये भाई वो उन्होंने ना वो जो ऊपर लेके जाते हैं तुम्हें रास्ते में, तो गाड़ी दे थी उनकी ओमनी, और हम सब बिठा दिए घर वाले उसमें लोड। और मेरे को था ये गाड़ी लेके कैसे जाएगी, इतनी चढ़ाई कैसे करेगी भाई। वो कैसे चलाते हैं पहाड़ों वाले, घुमा घुमा के पता नहीं कैसे पहुंचा दिया हमें ऊपर। मेरे को ये था मैं क्या अब गई बस नीचे। भाई वो प्रोफेशनल ओमनी ड्राइवर नहीं है। पहाड़ों वाले तो भाई तो लोगों की थार थार फंस जाएगी, थार फंस जाएगी तुम्हारी, डिफेंडर फंस जाएगी, इवन डिफेंडर भी फंस जाएगी भाई। ये बंदे अल्टो में से निकाल देंगे, लॉर्ड अल्टो बोलते हैं सर, लॉर्ड अल्टो। खेल के मैं जाऊंगा ऑफलाइन। मेरे डॉग के पास है वो वाली मारुति फॉलो 800। द क्रूज फिर से वही आ गया भाई, 3 बार तो सेम रेस खेल रहा हूँ मैं। उसको बहुत स्वाद आता है चला के मारुति को। Okay, we're in for another. जाता नेट मेरा मेरा नेट क्या था, तेरा ही नेट गया। मैं अब जा रहा हूँ ऑफलाइन। चल नहीं रहा, नहीं बड़ी जल्दी जा रहा है तो अभी तो 11:30 में। नींद भी लग रहा है ना। कल खेलूंगा। ओ वाह यार कितना घैंट बनया यार वो वाले पेपर मेरे।